Hello and Assalamu alaikum. मेरा नाम मानूर उमर है. I'm a lawyer and a gender consultant. The title of today's video is The Gender of Justice. We're going to discuss gender gaps that exist in the criminal justice sector, why they exist, and their causes and solutions as well. अब बात जब आती है इंसाफ की, औरतों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा पाकिस्तान में? इसकी कई वजूहत हैं, बट द स्टार्टिंग रीज़न इज़ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन. जब आपकी पॉपुलेशन मिरर नहीं करती आपकी इंस्टीट्यूशंस को, तो उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, बिकॉज उनके उनके इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ नहीं बन पाती. तो हम आज बात करेंगे अबाउट व्हाई दीज गैप्स एग्जिस्ट and how we can solve them. The World Economic Forum Global Gender Gap Parity Report rated Pakistan as 145th out of 146 countries, meaning it's the second last worst country for people to live in, for women to live in. And that is why we must discuss what's happening today and start working on it. जब हम gender gaps की बात करते हैं, let's talk about what gender gaps are first, right? एक gap, एक barrier जो आपके जेंडर की बेसिस पे पाया जा रहा है हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट जेंडर गैप दैट एग्जिस्ट इन ऑल मेन क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मतलब who gets to sit on this seat, who gets through the door, and who comprises, who is the, what makes up the composition of these institutions, right? पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन है 240 million plus people, 240 million plus people, and 50% of that is women. That means 120 million women are in this country. And let's say you have a police force of 1 million police officials. तो अगर पाकिस्तान की पुलिस में सिर्फ 1.5% of the officers are women, that means for a population of 120 million people, 120 million women, sorry, you only have out of 1 million, 15,000 female police officers. How is that fair? And how will that actually lead to a just society? It won't. Because 99% of the times, अगर मैं अभी call करूँ 15 पे and I report that something bad has happened to me here or on the road or in my home or in my office, highest chances 4 men will show up. Maybe a woman with them, but the likeliest chances in the thana closest to me, there might be no women. So the problem, no women who are available to come at the time being. So the problem here is when women are not represented in these institutions, then the women citizens' needs are not effectively catered to. According to the 2024 report by Nida Usman Chaudhary on the justice sector gap analysis, police में सिर्फ 1.5% make up the women, judiciary में 16%, with only 2 women in the Supreme Court and only 5 women out of 143 men in the High Court. So this makes up a total of 16% of our judiciary is female. And 15% of our prosecution का क्या काम है? To put criminals behind bars. अब 15% of prosecutors, these lawyers, make up women. तो आप सोच ही लें कि उनके cases कितने seriously ले जाते हैं. एक case example है from the United States, and I'm going to use this case to explain to you why women's representation is important. It's called Safford United Reading versus Safford United School District versus Reading. It was a 2009 case जहाँ एक 13 साल की बच्ची के साथ एक स्कूल के अंदर in the US एक strip search किया गया था by male school officials. जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा अमेरिका के, तो वहाँ the male judges on the panel said, इसमें क्या बड़ी बात है, बच्ची है, strip search ही तो हुआ है. But it violated her Fourth Amendment constitutional right to not have unlawful seizures and searches. उस पैनल पे बैठी हुई थी जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग, एंड यू नो व्हाट शी सेड? शी वाज एबल टू advocate for why this was unconstitutional as a female judge on the panel, and then later she was quoted saying, my colleagues don't know what it's like to have been a 13-year-old girl. So because her colleagues couldn't understand the experience of a young woman or a woman, they were making light of the matter. Similarly, अगर रूथ बेडर गिन्सबर्ग उस जजेस पैनल पे ना होती, या अगर जस्टिस आयशा मलिक was not a high court judge in 2016, the two-finger virginity test that rape victims are subjected to would still be standing today. So without women in the judiciary, women's perspectives and the law that is made to protect women is not interpreted effectively. And when we come to these things, ये क्यों है barriers? क्यों हमारे पास औरतें नहीं है पुलिस में? क्यों हमारे पास औरतें नहीं है prosecution में या judiciary में? पहली बात आती है घरों से.
स्कूलों से, सोशल बैरियर्स में लड़कियों को स्कूल से ही सिखाया जाता है कि आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाओ, साइकोलॉजी, आर्ट्स, स्टेम एंड लॉ, और ये सीरियस सब्जेक्ट्स लीव फॉर द बॉयज़। बट इट्स टाइम्स आर चेंजिंग। मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि क्या लॉ, वकालत एक सेफ फील्ड है औरतों के लिए? क्यों नहीं है? Alhamdulillah, and I'm just speaking from my experience, I feel very safe in the district courts. I feel obviously overwhelmed as well. अगर आप एक कमरे के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर हैं जो छोटा सा है, उसमें आप और शायद एक और औरत होंगी, in a room of 40 men, you are bound to feel a little uneasy. Uneasy तो मैं रोज फील करती हूँ, but uncomfortable not, because my male colleagues have been educated and sensitized enough. I'm lucky to say that. But काफ़ी मेरी colleagues हैं female जो ये नहीं कह सकती हैं. They have felt uncomfortable by their colleagues. They have made to been feel uncomfortable by male judges कि उनसे कोई इस उल्टे सीधे सवालात पूछे जा रहे हैं. तो ये हम जो अनकंफर्टेबल एक कल्चर है इन हमारे पुलिस ऑफिस में, हमारे कोर्ट्स में, हमारे प्रोसिक्यूशन बिल्डिंग्स में, हमारी जुडिशरी में, ये अनकंफर्टेबल जो फीलिंग्स है तब खत्म होंगी व्हेन मोर वुमेन आर इन दीज बिल्डिंग्स. जब और औरतें आएंगी इन बिल्डिंग्स में तो और बच्चियां फिर ज्वाइन करेंगी इन फील्ड्स को. बट द इनिशिएटिव मस्ट स्टार्ट बाय द स्टेट. We need to have awareness campaigns about the importance of women. We need to highlight media में what female police officers are doing, such as Amna Baig, such as ASP Sherbano, जिन्होंने वो इचरा बाजार इंसिडेंट किया था, Helena Said, who was the first additional inspector general in Pakistan. Women are breaking the glass ceiling, but ये higher level पे है. हमने रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हायर लेवल्स पे नहीं लानी, हमें रिप्रेजेंटेशन सारे लेवल्स पे लानी है. आई वांट टू सी अ फीमेल कोर्ट रीडर जो बैठे हुए होते हैं कोने में, क्लर्क्स. आई वांट टू सी फीमेल जैनिटोरियल स्टाफ मोर सो इन दीज कोर्ट्स. आई वांट टू सी वुमेन स्टार्टिंग एट एवरी लेवल एंड अप. ये नहीं कि सिर्फ और फीमेल जजेस आए और फीमेल जजेस के पीएसएस आए. सुप्रीम कोर्ट का अगर हम स्टाफ देखिए उसमें जो पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं और स्टेनोग्राफर्स होते हैं और कोर्ट एसोसिएट्स होते हैं, आईटी में लोग होते हैं, उसमें इतनी औरतें नहीं हैं. तो हमें चाहिए representation at all levels. And this can be done so when we stop gatekeeping. वो जब हम रिक्रूटमेंट में कोटाज लाएं, जब हम लोग स्कूलों में, घरों में पढ़ाएं लोगों को about how these are safe environments for women to be in, and this is a woman's job. It's a woman's field because it's a woman's world. So women do belong in these fields. Thank you. हमने अर्लियर बात की थी कि रिप्रेजेंटेशन औरतों की क्यों कम है एज इन रिगार्ड्स टू हाउ दे हैव ट्रबल्स एंड बैरियर्स एंटरिंग द फील्ड इन द फर्स्ट प्लेस. सोशल रीजंस, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स. अब हम बात ज़रा इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स पे ज़्यादा करेंगे कि अगर आप यू एंटर्ड द डोर, आपकी रिक्रूटमेंट होगी, यूर इन द सिस्टम. देयर आर ऑल्सो जेंडर गैप्स एंड बैरियर्स इन प्रोग्रेशन, राइट? अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इफ़ आई हैड जॉइंड द प्रोसिक्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ केसेस वुड आई बी गिवन एज अ वुमन? मेरे प्रमोशन के चांसेस क्या होंगे? वेरी लिमिटेड मोस्ट टाइम्स. यू नो व्हाई? बिकॉज at the end of the day, women are judged based on their social commitments. इंटरव्यू में कितनी औरतों से पूछा जाता है, क्या आपकी शादी हुई हुई है? क्या आपका बच्चों का प्लान है? हाँ, होना भी चाहिए. अगर है भी तो आई वॉन्ट टू लिव इन अ पाकिस्तान और इन अ वर्ल्ड where these institutions are ready to inconvenience themselves and keeping a woman because of the benefit they will accrue from having her on board. आप उसको दें maternity leave, आप उसको एक paid maternity leave दें और उसको flexible working hours दें, because the benefit she's bringing to your organization through her perspective, through her effective policy making, and through the fact that she's serving the citizens, she's giving them what they want when she is around. So sorry, this inconvenience is worth it at the end of the day. इसका ये मतलब नहीं you don't hire women in the first place or you don't give them promotions. इक्वालिटी होती है सेम सेम देना, पर मुझे सिर्फ इक्वालिटी नहीं देखनी. आई वॉन्ट टू सी equity, right? So if certain extra flexibilities need to be made to cater to women's needs or to even cater to transgender persons' needs, कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के भी representatives को हम representation दें, तो ये बिल्कुल स्टेट का जॉब है कि वो दें, right? Because अगर उनकी institutions की सारी फोटोज जो हम देखते हैं ना, ब्लैक कोट ब्लैक कोट ब्लैक कोट ब्लैक कोट, मैन वेयरिंग अ ब्लैक कोट ब्लैक कोट ब्लैक कोट, that's not a room or that's not a world, that's not a Pakistan or a country anybody should even want to live in. I saw a photo the other day, और मैं देखती रहती हूँ often न्यूज़ चैनल्स पे, जिसमें हम बेशक देखेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, right? This Punjab has a higher population than half of Europe. So she is sitting at the as the captain of this ship, and I'm so happy for her despite how she got there. But my point is, so when women like Maryam Nawaz, Hina Rabbani, Senator Sherry Rahman make it to the top, I sometimes wonder
What actions or initiatives have they taken to include and bring other women on board with them? Senator Sherry Rahman, and I'm really happy for all the work she's done. I think she's really cool. उन्होंने एक photo लगाई थी उस दिन that said it's not often times कि in a room full of men they have to listen to a woman, and वो बिल्कुल she's sitting at the head of the table and she's surrounded by men everywhere. मैंने ये फोटो देखी, मैंने ये सोचा I'm happy for her. I'm happy that she's sitting at the head of this table. फिर मैंने दूसरी चीज़ ये सोची कि why are you in a room full of men? आपने क्यों नहीं इतनी कोशिश की कि आप इंश्योर करें कि आपकी पार्टी मेंबर्स जो इस मीटिंग में आए हुए हैं उस पार्टी उस मीटिंग में औरतों का भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो, उनके भी कोई उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट करें टू व्हाटएवर वर्क दैट यू आर डूइंग. So it is the job of women who have broken the glass ceiling to ensure that they're playing an active part in bringing other women up with them. इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स की जब हम बात करते हैं, एक तो गेट कीपिंग कल्चर आ गया, और व्हेन पीपल मेक इट टू द टॉप सेल्डम डू दे केयर अबाउट दोज एट द बॉटम. दूसरी बात आती है जब इस इंस्टीट्यूशन व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट केटर टू द नीड्स ऑफ वुमेन, and these are very small things like bathrooms, like daycares, like secure seating, private seating, restrooms where they can rest in peace, chambers where they can go and sit by themselves. एक Punjab Women Judges Conference report थी from 2016 where there was a judge, Miss Maruk Aziz. She was a district and sessions judge who was posted to Sargodha. जब उनकी पोस्टिंग हुई सरगोदा में, उनके जो सेशंस जज इंचार्ज थे, उन जज ने उनको कैटेगोरिकली बोला, आपको हमारी टी रूम मीटिंग्स में आने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी ज़रूरत हुई हम आपको बता देंगे. There's no need for you in these meetings. So women aren't just socially excluded by unwelcome behavior, पर उनको बोला भी जाता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है मैडम, आप अपने आप को तकलीफ ना दें. आप क्यों assume कर रहे हैं कि आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं? It is her right to sit in these meetings. It is her right to be there. So when we talk about progression, promotions and career progression में एक capacity building opportunities are lacking for women. I agree that to reach a certain level of leadership, आप उस level पे तो पहुँचे, but आप जो institutions हैं उनको initiative लेना चाहिए to give the requisite trainings to both men and women to progress in these fields. Men को जो trainings मिलनी चाहिए gender sensitivity की, कि how to interact with women. Women को कौन सी trainings मिलनी चाहिए? They should be trained in how to be perhaps ready for leadership, how to take control, how to lead teams more, or whatever trainings they need in that area that they're in. And last but not least, it's time to talk about gender responsiveness. इसका क्या मतलब है? हमारे जो criminal justice system में इदारे हैं, वो to what extent are they able to cater to the needs of gender minorities? इसका क्या मतलब है? हमारे prison policies और prison के institution को ले लेते हैं as an example. The way the prisons have been designed have been while keeping men's needs in mind. औरतों की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज नहीं बनी थी, ना ये प्रिजन्स बने थे. सो व्हाट डज दिस शो अस? इट शोज अस दैट यू आर अप्लाइंग अ वन साइज फिट्स ऑल kind of an approach to everybody, but that isn't fair, right? Because women have a very different experience of incarceration than men. So when we talk about gender responsiveness, it includes many things. Did you keep the needs of women and gender minorities in mind while making this law? क्या आप ये लॉ फिर इन्फोर्स करते हुए देख रहे हैं? क्या इसका आउटकम वही आ रहा है जो आप चाहते हैं? So how can we make our institutions more gender responsive? First and foremost, put more gender variation in the institution. And number two, have some accountability checks in place, right? हम लोग laws बना लेते हैं, enforce कर लेते हैं, but data सबसे मुश्किल चीज़ है पाकिस्तान में ढूंढने. If I want to go online and find out how many police officials, how many prison officials are women, I will not know. Right? I actually did try finding out. I couldn't find a number for this. हाँ, judiciary के मिल गए, prosecution के मिल गए, मगर इसके नहीं मिले. How many wardens are men or women? So we need to now start sharing gender disaggregated data. A 2023 report by the Law and Justice Commission of Pakistan states that Pakistan in 2023, for gender-based violence cases, there was a conviction rate of only 5% and an acquittal rate of 64%. पहली बात तो ये, एक केस को लाना ही, उसका FIR लिखना भी इतना मुश्किल होता है for women or minorities or marginalized groups कि if they took the step to even report the crime, it's very unlikely that even despite taking such a brave step, they'll get justice. Why? Because of procedural lapses. हम आराम से कह देते हैं कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता, जजेस बुरे हैं, नहीं. सारा एक pipeline है criminal justice sector. It starts with
the first instance report. FRR के बाद जब investigation होती है, उसमें अगर आपके forensic samples time पे नहीं भेजे गए FSL lab, lost its evidentiary value. आपका 161 का बयान CRPC का नहीं लिया गया, lost its evidentiary value. आपके witnesses tamper हो गए हैं, again, your case falls, right? So at the end of the day, from this first link of the FIR to the prosecution, to the judiciary, and even then if you go to, if the prisons happen, if you go to prison or not, at every stage, we need to see a gender responsive approach. And only then will the acquittal rate of gender-based violence perpetrators drop. मैं आपको एक example यहाँ दे देती हूँ. जब मैं court में बैठी हुई होती हूँ and I see a male prosecutor with case files of a case जहाँ gender based violence हुई है, अक्सर उनको तो they have so many cases, उनके लिए तो रोज़ का काम है, एक desensitization भी हो जाती है सुन सुन के कि जातियाँ हो रही हैं, तो वो वहाँ खड़े हुए होंगे. The defense criminal lawyer is giving a great case about why the evidence loopholes are very strong to let this perpetrator off the hook. Prosecution के जो वो अंकल खड़े हुए होंगे, he won't, जज बोलेंगे do you press this case on merits, he'll be like नहीं सही है, he'll just be standing there. He won't really add to the case. उन्हें probably file भी नहीं पड़ी हुई होगी. उनका काम था हाजिरी लगाना. I'm not saying कि सारे male prosecutors इस तरह होते हैं. Some are actually very amazing. मेरा कहने का मकसद ये है कि I personally have seen female prosecutors are likely to take the cases of GBV slightly more seriously than male prosecutors. So this right here just shows you how your chance of justice increases at every step when the gatekeepers of justice look like you, sound like you, and think like you. And so, moving forward, if we want to create a justice system that is genderless, that is for everyone, we need the state to start taking affirmative action. Recruit more women, make your buildings gender responsive, have female bathrooms, have daycares, put a diaper changing area in the male bathroom and the female bathroom. And last but not least, make sure that social stereotypes are removed when it comes to promotion practices. अपनी training करें, अपने staff की training करें कि women should no longer be seen as weak. And support flexible work-life balance. If justice continues to have a class, a gender, a religion, then it's not a justice system built for all. If we want a justice system that caters to all Pakistanis, then we need a justice system that looks like Pakistanis and its population and its demographics. Thank you. And where we see the lack of gender responsiveness manifest in the criminal justice system is not by कि जब FIR कटवाने एक औरत आती है तो कहते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है. आप देख लेना, वो उधर ही उनको इतनी उनकी सोशल बायसेस इतने आ जाते हैं कि वो FIR भी लिखना नहीं चाहते. फिर आती है जी विक्टिम ब्लेमिंग. क्या पहना हुआ था आपने, आप उसके घर उस वक्त क्यों गई, आप रात को चल क्यों रही थी. मोटरवे पे एक औरत का उसके बच्चों के सामने रेप हुआ है. What did our highest police official who was managing this case say at the time? वो मोटरवे पे अकेले क्यों गाड़ी चला रही थी. अरे भाई क्यों ना चलाएं. Are women not allowed to commute from point A to point B safely? And अगर उसके साथ कोई हादसा, कोई जाती हो, तो उस जाती पे आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि उसने ये कैसे कर लिया उसके साथ. आप ये पूछिए कि वो गाड़ी क्यों चला रही थी. आप ये पूछिए उसने पहना हुआ क्या था. There's a quote that comes to mind here. Was it really my fault? Asked the short skirt. No. It happened to me too, replied the burqa, and the diaper in the corner couldn't even speak. So these violent crimes don't happen because of what someone's wearing or what time they're walking by. They happen because we live in a society where criminals feel that they can walk free and they have full freedom to do as they please because of the patriarchal power they hold. And we can only target this when we can say that our criminal institutions are backing the victims, not letting the perpetrators walk free, and not shaming the victims when they come to your institution for insaf. Well, if you've made it this far, thank you all for watching my show, Learning with Manur. Please subscribe for more, and thank you so much to Shutter Game Studios for producing this video.